That's a boundary. Not very intended, but will get it. Yasir Khan just forcing that towards onside and gets the result on his favour. It's a poor delivery from Ahmad. Has everything towards the offside. You got a slip in place. You got short cover. And then you're just dragging it short, straighter onto the pads. Easy pickings with 45 in. It was a definite boundary. Yeah, you make a good point when you say you have to time it rather than force it. I think Heather Ali is a prime example throughout the tournament, the way he's batted. Timing, yes, and shot selection. Game awareness too, in my opinion. Change in field, slip comes out, and is placed at mid-wicket. Good run, very good run, putting pressure on the fielder, running straight away. I'm not really sure why Shadab moved himself from the slip to short mid-wicket. They're chasing 163, but again, it's not an easy surface. And if you keep your line and length outside off stump, don't allow Yasir to free his arms, I think it's more conducive conditions for the bowlers to pick up wickets. And you're not going to probably contain these runs. You need wickets up front. Just keep the attack going on. Especially with the new ball. Oh no, confusion. It's back on time. I think the plan is just to frustrate them, keep it tight within the stumps, not looking for wickets, dry up the runs, force them to make a mistake. With the field setting, it suggests that. Yeah, just wanted the single straight away. Mars, Seam Jr. on the receiving end, did well. A good loud call in time by Yasir. He's picked that one. That's a nice hit. And maybe just bouncing before the ropes to go to the boundary. Signs of aggression from Mars. Denied a single by Yasir. He was ready to hit that for... He didn't went for a maximum, but for a boundary. Mars just again dropping it short. Mars had ample time to reach it. Still checking the boundary. No, it went all the way for a maximum. That's a great result for Mars. The length, he picked it up beautifully. "11 runs off the over. A dot will end the over from Ahmad Butt. 2 gone, 15 for none. I love this. They've come in numbers to watch these big boys. All three will be in action. One is at the moment, and the remaining two later in the day. Oh, that's a thumping shot. That is fantastic from Yasir. Back foot player he is, they say. That's the area, Yasir. Anything short and wide, he'll put you away. He'll punish you like he did on this occasion. Umar was quite decent in the first over, pitching it up, but have a look at that. Just stayed there, played it right underneath the eyes. Right out of the middle of the bat. Change in field straight away. They've got deep point now. Third coming in the circle. Stand and deliver, he says. Oh, no, that's a biggie. That is marvelous from Yasir
On the other side of the pitch this time. Poor bowling from Umar. Overcorrection, both in line and length. This time straying down the leg. Fuller onto the pads. And Yasir is too good to put those away. And they need to have a plan. Execution has been poor so far from Lake City Panthers bowlers. Have a look at that. Just planting that front foot. Bottom hand coming into play. Full follow through of the bat. That was a delight to watch. Strong wrists also. Makes it look so elegant. Comfortable. That's a good comeback by Umar. Got to be within the stumps. If it's not swinging for you, that's the best you can do. But Yasir, it's been magnificent in this over. Different sides of the crease. He's played some quality shots. That shows that he's got the range. The first one, through covers. Okay, later. Right, first one, through covers, stand and deliver. The next delivery onto his pads. Great use of the wrist. And all the way. Quality. ABL Stallions are on a roll. Forces it. Gets the edge. Maybe not quite from the middle of the bat. Will still get a couple of runs. Yeah, as a bowler, you need to execute the plans given by the captain. And yeah, Umar is actually making things difficult for Shadab because he's not bowling according to the field. They've got deep point. The idea is to bowl outside off stump, slightly on a hard length or shorter length, especially to Yasir. But Umar has been struggling to do that in terms of line in particular. 12 already of this over and they're off to a flyer. Light Bank Stallions. 2 more deliveries to go. Yasir. Now for Yasir, they've brought that deep point in circle. The change of plans. Let's see if Umar can bowl according to the field given. Slower bouncer. Good comeback. Few words also. Is it to the wicketkeeper or to the batter? That's the question. Yeah, to the batter. But all in friendly way. All smiles. Right, Marina Iqbal, just a question for you. In these conditions, we've seen the fast bowlers getting the help and the assistance from the pitch. Panthers starting off with a medium pacer. Ahmad Butt from the other end. They've got Wasim Jr. playing, yes, but he's usually bowls with an old ball. They've got Ali Raza sitting at the bench. Do you agree with the selection that they have, this playing 11 with Ali Raza sitting at the bench? I would like to see Ali Raza in action. He did well. He played a couple of games, delivered well with the new ball. He's a very smart operator, young but beyond his years. So I would definitely want him to see a quick single to end the over. There's a definite question there in terms of selecting the playing 11. 1 to end the over, 3 gone, 28 without loss. Yeah, on right top corner, Zishan Zamir made his name early on in his career, but then lost his way through injuries. Really looking forward to see him back whenever he is ready, of course. Nice jacket, by the way. You always have an eye for jackets, looking all over, picking from crowds and players. Let's hope you get one from any of the players. I like good vibrant colors, orange and black for Stallions. Mubassir, 15 wickets. Orange with black. Oh, he's gone for it. He's given it out. Very first delivery. Aggression from Mubassir. Showing the way to Yasir. That's where you need to go now. That's the first one for them.
The change has worked for Lake City Panthers. Mubassir was brought in and Yasser has to take the walk back, sent by some aggression, as you said. First delivery, he went for it, not sure if that was a smart shot on offer. But Mubassir is always keen. Into the surface he bowled. And he was in no position to play that shot. No eyes on the ball and he has to pay the price. Was off and running. Yasser gone on 20. Allied by Stallions 1 down on 28. Good change by Shadab, bringing in the off spinner and straight the results are shown. Question mark on the shot selection, yes, from Yasser. Was it needed? As it brings out Haris, the captain. Good battle in our hands. There's a bit of aggression from both sides. 2041 runs. That's the sort of a game, Marina, you want to see, where everyone is looking to win. No matter what happens, there is aggression from both ends. Yes, definitely. No one is there to lose the game. Everyone wants to be on top of their game. And Mubassir, as we know, he is a bit of a character. Slammed hard. There's a protection, but it will pick up the gap and a boundary. Haris up and running with a 4. That's how he plays. Second delivery he faces. He smacks that one to mid-wicket. That's where he likes it, off spinner. Down the track. In the gap and a boundary to follow a boundary. Well, this was missing from Haris. In the previous game, he initially took his time, but right on attack, especially against Mubassir, I think he's not happy as a captain because Mubassir had a word with Yasser. Straight away, dancing shoes on. A big heave over mid-wicket and picked another boundary. He means business. You know what they call it when you've got a bowler bowling in your favor? Loot low. I think that's what they're doing. Again, great wrist work. Not quite the same result, but will get a couple of runs. He's looking good, Haris. Good start for him. He's here because of this. Not a good shot selection from Yasser. You can see he didn't keep the eyes on the ball. The length was slightly shorter. You're facing the first delivery. You could have played it off the back foot. Forced that shot and paid the price. 1 to end the over. 4 gone. Allied by Stallions 39 for 1. एलाइड बैंक स्टैलियंस की टीम खेल में आगे है। उमर आज बदकिस्मत रहे, इनको जल्दी विकेट मिल सकती थी लेकिन कैच गिरा दिया गया। वसीम जूनियर की जानिब से अपना तीसरा ओवर करेंगे। आसान काम नहीं है मुसलसल 3 ओवर करना पावर प्ले में। इससे चलता कर दिया, बिल्कुल आखिर में उन्होंने डिफ्लेक्शन की और 4 रन बना लिए। हारिस ने मौका नहीं था यहाँ पर उमर सिद्दीक के पास विकेटों के पीछे। सलमान भट्ट हैं कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ। बहुत शुक्रिया तारिक भाई। और हारिस ने
बड़ी जहानत के साथ इस गेंद को खेल दिया, क्योंकि थर्ड ऊपर थे और ऑफ स्टंप के बाहर ये लेंथ गेंद। हालांकि इसी टूर्नामेंट में एक बार यही शॉट खेलते हुए कीपर के हाथों कैच आउट हुए, लेकिन अपॉर्चुनिटी थी और अच्छा इस्तेमाल किया, और इसकी वजह से अब थर्ड को वापस भेजा जा रहा है और कवर के जो फील्डर हैं वो वापस सर्कल में आ गए हैं। बेदिली के साथ हारिस दौड़े, मास सदाकतन दरअसल उनको उकसाया रन लेने पर। अच्छी गेंद थी, विकेटों के बीच लेंथ भी अच्छी थी, और ये बड़ी अच्छी तब्दीली है हारिस में जो हम इस टूर्नामेंट में देख रहे हैं। पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में हारिस खुद ब खुद अपनी विकेट जो है वो गंवाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर बड़ा ही खुशाइंद एटीट्यूड उनका बैटिंग में है कि वो वक्त ले रहे हैं, और हालांकि वक्त ले रहे हैं फिर भी इनके स्ट्राइक रेट भी अच्छा है और इनकी शॉट सिलेक्शन भी बेहतर हुई है। 7 गेंदों में 16 रन्स पे खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ खेलते नज़र आ रहे हैं, जो कि एक कप्तान के शान शान लगती है चीज़। ये बहुत ही अच्छा चेंज है। जैंक्स जब्त आया है इस साल पेशावर के लिए। कायदे आजम ट्रॉफी के भी कुछ मैचेस खेले हैं इस टूर्नामेंट से पहले, और जब आप रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं तो ये खुद पे भी काबू पाना सीखना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, ये बड़ा ही एक ज़रूरी आंसर है इस खेल का कि आप अपनी टेम्पटेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं, और बहुत सारे प्लेयर्स इसकी नज़र हो जाते हैं। तो हारिस ने अच्छे टाइम पे इसको तब्दीली की तरफ गए हैं, क्योंकि ये जिस तरह के प्लेयर हैं तो 1-2 अच्छे ओवर्स में मैच का नक्शा बदल सकते हैं। इस बार फिर सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला है, बहुत ही शानदार रनिंग और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है ये दोनों बैटर्स की। क्रीज पर पहुंचते ही आज इनने बॉलर्स को हदफ बनाना शुरू किया। वो मैदान जो है जितना भी बड़ा हो इनके लिए कम पड़ जाता है जब ये टाइम करते हैं। स्ट्रोक्स की बहुतात है, विकेट की दोनों तरफ खेल सकते हैं। इंतहाई मौजूद क्रिकेटर T20 के लिए। एक चीज़ और ये है कि ये जो अपने दोनों ग्लव्स उतार कर ये एक हाथ में पकड़ लेते हैं, इससे बिलाशुबा भागने की जो स्पीड है उसमें कमी आती है, और इसमें जो आपने टर्न लेना है बैट को क्रीज के अंदर लगाने के बाद दूसरे रन के लिए, तो इसमें डायरेक्शन भी आपके चेहरे की जिस तरफ बॉल गया उस तरफ होनी चाहिए। तो आप दूसरे हाथ में स्विच भी नहीं कर सकते बैट को अगर आपने एक हाथ में ग्लव्स पकड़े हुए हैं। तो ये वो चीज़ है जिसको हारिस को अवॉइड करना चाहिए, और देखने वालों के लिए भी एक राइट जो चीज़ है करने वाली, जो सही तरीका है उसका इल्म होना चाहिए। ये भी एक बार फिर थर्ड की तरफ खेला और अच्छी एग्रेसिव रनिंग कर रहे हैं दोनों। वो देखिए ग्लव्स एक हाथ में है, इससे कई बार आप उस तरफ नहीं देख सकते जिस तरफ से थ्रो ने आना है, और अगर कई दफ़ा बैटर्स को भागते हुए थ्रो भी आके हाथों पे लगती है तो एक कप्तान और बल्लेबाज को इंजरी भी हो सकती है। यहाँ ये बहुत अच्छा सबक है जो हमारे यंगस्टर्स जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं, और अब इस बार ऑन साइड में अपने बल्ले को स्विंग करने चले गए थे, एक ही रन मिल सका। खासे फाइन वहां पर मौजूद हैं उसामा। इस ओवर में बने 9 48 पर एक। ये कम ये ये ऐसा मंजर बहुत कम देखने को मिलता है कि स्पिनर्स जो है वो जिस्मानी तौर पर ज्यादा ताकतवर हो फास्ट बॉलर्स की निस्बत एक ही फ्रेम में। जी हाँ, इब्तदा के दिन है, ये दोनों फास्ट बॉलर्स टीन एज में हैं, यंगस्टर्स हैं, और मेरा ख्याल है कि साजिद इन्हें यही कह रहे हैं कि यार थोड़ा खाया पिया करो, आगे तुम लोगों का काम बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल।
वसीम जूनियर आ गए। ये अच्छे ताकतवर फास्ट बॉलर हैं। अगर आप माजी में पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को देखें, वसीम भाई, वकार भाई, शोएब अख्तर, मोहम्मद समी, उमर गुल, वहाब तक जितने भी फास्ट बॉलर्स आपके आए हैं, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मोहम्मद जाहिद, कबीर खान, साजिद शाह, सभी लोग काफ़ी तगड़े थे। और यहाँ पर अभी इब्तिदा के दिन है, इंशाल्लाह ये भी उसी तरफ जाएंगे। एक रन का और इजाफा। मास सदाकत जो है अच्छी फॉर्म में रहे हैं। टॉप ऑर्डर से इन्होंने ज़्यादा दबाव नहीं स्टैलियंस पर आने दिया। मुसलसल रन्स बनाते चले आए हैं। लेफ्ट हैंडर्स हैं, इसका एक अलग बोनस है इनकी टीम के लिए। तीनों प्लेयर्स जो इस टाइम दो क्रीज पे मौजूद हैं और जिनके हाथ में बॉल है, तीनों का ताल्लुक केपी से है। बहुत सारी क्रिकेट इन्होंने इकट्ठे खेली है, खूब जानते हैं एक दूसरे को। इस बार अच्छी लेंथ, अच्छी लाइन, और हारिस ऑफ स्टंप की तरफ बड़ी शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन थ्रो स्टंप्स पे लगी। और अपील शादाब खान की तरफ से, जिसकी वजह से अंपायर को रेफर करना पड़ा इसे थर्ड अंपायर की तरफ। डायरेक्ट हिट है, और डायरेक्ट हिट्स जो है कभी कभार ये सम को चौंका देती हैं। और टीवी अंपायर एक नज़र इस पर डालना चाहते हैं। इम्तियाज इकबाल आज पहली इनिंग्स में भी उन पे खासा मुश्किल फैसला किया था। दरअसल वो शॉर्ट रन का था। यहाँ ये तो बआसानी पहुंच गए थे। और ये शायद जरूरत भी नहीं थी टीवी अंपायर के पास जाने की। शादाब खान के इसरार पर यह फैसला थर्ड अंपायर की तरफ रेफर किया गया। और कभी कभार फील्डिंग टीम्स को लगता है, लेकिन चीज़ वो नहीं होती। और ये बड़ा खूबसूरत शॉट, ये फ्लिक किया है और मिड विकेट की तरफ इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि स्क्वायर लेग डीप थी। बहुत ही शानदार शॉट, कंट्रोल के साथ इसको खेला है। और यकीनन अपनी लाइन और लेंथ को बेहतर करना पड़ेगा। जब लेफ्ट और राइट इकट्ठा खेलते हैं तो ये प्रॉब्लम्स अक्सर फास्ट बॉलर्स को फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ अच्छा रिस्ट वर्क, पूरी तरह से कंट्रोल में थे। जहां खेलना चाहते थे दरअसल गेंद वही गई। ये बहुत शानदार क्रिकेट है, अच्छी क्रिकेटिंग शॉट, बाउंड्री लगाई और उसके बाद सॉफ्ट हैंड्स के साथ खेला एक अच्छे गेंद को और सिंगल हासिल किया। पार्टनरशिप पहुंची है, ये तकरीबन 28 रन्स पे पहुंच गई है पार्टनरशिप, और टीम के रन्स 56 है। पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल इन्होंने किया। अभी एक बॉल बाकी है इस पावर प्ले के अंदर। यहाँ पर दूसरा रन लेने के कहाँ हैं, मुड़ जाएंगे वापस, क्योंकि बाउंड्री का फासला खासा ज्यादा था। नर्म हाथों का इस्तेमाल किया था हारिस ने। ये ओवर डबल फिगर तक गया, 58 पर 1। पावर प्ले में 58 रन्स बने और ये सब हुआ। ये देखिए पहला शॉट, ये एक आसान कैच था जो वसीम जूनियर, जो कि अच्छे फील्डर हैं, इसको नहीं पकड़ सके। फिर बाउंड्रीज आती रही। मां सदाकत जो कि इस टूर्नामेंट में अभी तक खासी अच्छी बारियां ले रहे ओपनिंग पे आके। यासिर जिन्होंने काफ़ी बार अच्छी इब्तिदा की और उसके बाद वो ज़्यादा लंबा ना लेके चल सके इसको, उन्होंने 2 अच्छे स्ट्रोक लगाए। और फिर ये एक रश ऑफ ब्लड, एक सीधा गेंद, एक चेंज
बॉलर का पहला बॉल और उसको इस तरह का शॉट मारा, अपनी विकेट खुद गवाई। उसके बाद हारिस आए, उन्होंने आके अपना एज यूजुअल अग्रेसिव इंटेंट दिखाया और साथ कुछ अच्छे सिंगल्स भी लिए और स्कोर को पहुंचाया 58 पर, 1 विकेट के नुकसान पर। उसामा, पिछले मैच में इनने बड़ा शानदार तबाहकुन स्पेल किया था। ऐसे वक्त पर आकर ये रन्स रोकने में, विकेटें लेने में कामयाब हुए थे। देखना यह है कि आज अपने उस फॉर्म को फिर से कैश करा पाएंगे या नहीं। अशद ज़रूरत है यहाँ पर उनकी टीम को। फील्ड अब खुल के रह गई। इस वक्त 5 फील्डर्स हैं डीप में। फुल शॉट खेला। यहाँ पर दूसरे रन के लिए जल्दी करनी पड़ेगी और आप पहुंचे, अच्छी दौड़ लगाई माज सदाकत ने, डेंजर एंड किया नहीं। दोनों बैटर्स की रनिंग जो है वो बड़ी एग्रेसिव है और जैसे ही गेंद गैप में जाता है पहला रन खूब तेज लेते हैं और इसी की वजह से बासानी दूसरा मुकम्मल कर रहे हैं और ये अच्छी चीज़ है। स्ट्राइक रोटेशन बहुत आला कर रहे हैं दोनों बाउंड्री के साथ साथ। देखिए एक बार फिर इस गेंद को आराम से खेल दिया इन्होंने और इस टोटल में कोई बहुत ज़्यादा अंदर बड़ी हिटों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एक बाउंड्री के साथ ये अच्छी स्ट्राइक रोटेशन करते हैं तो बासानी इस टोटल को हासिल कर सकते हैं। 7वां ओवर है, 62 रन हैं, 2 सेट प्लेयर्स हैं, अच्छी फॉर्म। हारिस लेग स्पिनर। जी हाँ, मुबस्सिर खान बहुत दूर से दौड़े थे और आखिर में डाइव करके उन्होंने कैच मुकम्मल किया और हैरत अंगेज क्रिकेट का मुजाहरा, हैरत अंगेज फील्डिंग। बहुत ही शानदार। और यहाँ पर शोएब मलिक की जो तस्वीर है वो आपको बताती है कि इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी और इस गेंद पे बड़ी हिट लगाना चाहते थे, टाइम नहीं उसे कर सके और एक कैच जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुबस्सिर खान ने शानदार रनिंग कैच किया है और डाइव की और मेंटेन रखा अपने बैलेंस को और इंश्योर किया कि गेंद हाथ से ना निकले और एंजॉय किया उन्होंने इस कैच को। और ऐसी ही फील्डिंग है जो टीमों को मैच में वापस लाती है, जब वो कहते हैं कैचेस विन मैचेस। माज सदाकत 18 रन के बाद जाना होगा इन्हें, 64 पे 2। ज्यादा हो गया, बहुत बात सेंटर। हुसैन तलत जो कि फॉर्म प्लेयर हैं एलाइट बैंक स्टैलियंस के, एक लेफ्ट हैंडर गए हैं, दूसरे आ गए हैं, तो ये लग्जरी है स्टैलियंस के पास। हम वक्त एक जो बाएं हाथ का बैटर है आमतौर पर रखते हैं उसको ये मैदान में। ने गेंद को बिल्कुल सिक्के पर गिराया। बहुत ही शानदार आगाज विकेट के साथ उनका पहला ओवर मुकम्मल, 64 पर 2। नहीं चला गया पॉइंट।
change. Left arm. Bowling round. Keeper. Obi. ठीक है फिर ठीक है. मुकाबला इस वक्त बराबर का है। महासदाकत जो अच्छी फॉर्म में थे वो वापस गए। लवली लवली. पिछले मैच में नंबर 4 पोजीशन पर मोहसिन आए थे, आज हुसैन तलत उनसे पहले आ गए हैं। उसकी वजह ये लेफ्ट हैंडर के जाना था। महासदाकत का मोबी अंदर ही रहना है. बहुत ही कमाल कैच पकड़ा गया। टूर्नामेंट के बेहतरीन आउटफील्ड कैचेस में से एक था। और इस वक्त विकेट की अशद जरूरत थी, तो जाहिर है उसका थोड़ा बहुत प्रेशर भी होगा फील्डर के ऊपर। उसामा मीर इस टूर्नामेंट में भी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं। इससे पहले पीएसएल के बेहतरीन बॉलर रहे हैं ये पिछले एडिशन में, और रिकॉर्ड बनाया इन्होंने विकेट लेने का। लवली लवली यार. ये चीज़ अच्छी है स्टैलियंस की टीम के अंदर, जो स्टैंड आउट कर रही है चीज़ इस टूर्नामेंट में, वो इनकी स्ट्राइक रोटेशन है। लवली बॉलिंग. बहुत ही शानदार। मेरा ख्याल है अगर हम इसकी परसेंटेजेस को चेक करें तो शायद इस टीम की सबसे हाईएस्ट परसेंटेज होगी स्ट्राइक रोटेशन की। और यही वजह है कि ये इस टूर्नामेंट में ये अच्छी पार्टनरशिप्स लगाने में कामयाब रहे हैं। इस गेंद को फाइन खेला है और यहाँ पर शर्जील खान इसे रोक नहीं पाएंगे। ये अच्छा शॉट है, मिनिमम रिस्क, और इसका फ़ायदा 4 रन्स। और हारिस की ये खासियत है कि अगर ये वक्त गुजारते हैं तो फिर ये इस तरह के शॉट्स खेलते हैं जिससे रन्स का फ्लो बरकरार रहता है। 70 पे पहुंची हलाइट बैंक स्टैलियंस की टीम, और कप्तान काफ़ी सेट खेल रहे हैं। हारिस इस तरह के बैट्समैन हैं, अगर इनके सामने विकेट गिर भी जाए तो उस दबाव को ये फौरन ही ज़ायल कर देते हैं, जो इनने किया है यहाँ पर भी। मुसलसल 2 चौकों की मदद से इस बार अच्छा फुटवर्क और गैप को ढूंढ निकाला। जी हाँ, बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं। पहले ऑफ स्टंप के बाहर से छोटा पैडल स्वीप पे 4 रन लिए। पता था कि अब बॉलर जो हैं वो थोड़ा सा दूर पिच करेंगे बॉल को, क्योंकि अगले बॉल को वो स्वीप किया था, तो फीट को यूज करके बहुत अच्छा शॉट खेला इन्होंने। और साथ ही गैप में खेल के 2 रन्स, बहुत ही आला बैटिंग। रिस्क फ्री रन मेकिंग है ये। 10 रन्स बन गए 3 गेंदों में, और ऐसा नहीं लगा कि जहां पर कोई बड़ा रिस्क लिया हो इन्होंने। सलमान, एक सवाल लेकर आपकी तरफ आते हैं हम कि अब दूसरा राउंड आज शुरू हो रहा है। सिर्फ एक टीम जो है वो 200 का हिस्सा अबूर करने में कामयाब हुई अब तक। स्टैलियंस ने ही ये काम किया था, तो इसका जवाब हम ज़रूर हासिल करेंगे अपने अगले सेशन में। 77 पर 2। वेल बॉल सामा आएगा, बॉल मेरी तरफ आएगा. Well, this game is nicely poised. Allied Bank Stallions striking at 9.55. 6 bowlers already, and we've only gone through 8 overs into the 9th over, obviously. यहीं पे शेडी, लवली शेड, एक्सीलेंट सामा. Alongside me, settling in is Ali Yunus. आड़ी थोड़ा Good सा बाहर हो afternoon, सकता है. Ali. What do you make of this bowling effort so far from the Lake City Panthers? Well, it's been a mixed bag. They bowled some friendly deliveries with some quality deliveries also. That shows that they've not been quite consistent. As many as 8 bowlers used, as you said. In fact, 6, but they can. They've got a couple of more bowlers. I was assuming that Shadab and Danish Aziz, they can bowl too. So they've got 8 options as far as bowling is concerned. And out of the 8 overs, 3 has been bowled by Umar, so everyone else is bowled an over apiece. This is straight down the ground. He really chose a good area. Harris has been very proactive from ball 1. Sends Osama over long on for a 4.
That's a captain's inning, isn't it? He's taking the game on himself. Responsibility is shown, and some quality shot making too. कैच हो गया This is the top edge. अंदर आएगा, घूमेगी, It may घूमेगी। land safely. Yes, it does. Fortune favors the brave. Harris has been like a cat on a hot tin roof ever since he's arrived. Striking at 200. That's how he plays. He will always give you chances. Risky batting style he has. That look on the face of Osama Mir tells the story. आजा हाडी Feeling Harris is having quite a few near misses. Harris has been taking his time in this tournament. Not is the case today. 9 done, 85 for 2. Utilizing the Sunday. No school today. So it's a good time to come to the stadium, watch some quality cricket. Although very cold, but that doesn't stop the people of Rawalpindi. They've come in numbers. Good crowd in today. Being a Sunday and a double header, we expect it to grow. It's pretty chilly in the stands. You have to come well prepared if you're planning to come down to Rawalpindi Cricket Stadium. You need some warm jackets. Nicely played, Hussain Talat. Really playing it late. Deft touch will earn him a boundary. That's excellent batting. It wasn't an edge, it was deliberate. He played it late, as you said. Picking up the length one more time. It was outside the off stump. How late he plays it. Just a tap from the front of the bat. Great batting. Something reminds me of something what Babar Azam does so brilliantly. Played it late and places it. Wasim will offer plenty of pace. That occasion, angling in. It's an important partnership. The required run rate, Ali, at this stage is well under control, 7.41. Allied Bank Stallions. They've been mixed back in the tournament, but got plenty of experience. These both sides have actually got good strength and depth. Absolutely. As far as T20 cricket is concerned, they're a very good side. They've got all bases covered. They've got the flair, stability also in the middle. Not getting the two. Well done by the Anish Aziz. And the only issue I see with Lake City Panthers is fast bowling department. I think they're relying with Umar and Ahmad Butt medium pace, with Wasim Jr. With Ali Raza in the bench, I really hope that they bring him in the next games, because these conditions, these surfaces definitely suit his style of bowling. He bangs it in short. He's got good pace behind him. That's my personal opinion, though. It's a good bumper. Really surprising, Hussain Talat. Yeah, that's a good call, Ali. Ali Raza, very promising. Although, I might have thought it's just a case of workload management. His games are coming thick and fast. His young body still in the development phase. But I think you're right, after a gap of couple of games, maybe we'll see him in action. 20 years of age, work management, what work? We all used to love it at this age. Things have changed, Ali. It's not the same as they used to be. There's a lot of cricket that these boys have to play. Talking of young fast bowlers, next to Zaman Khan is Zishan Zamir.
Very, very good to see him back. We see him train every morning. Probably not ready for games yet, but he's well on the way back. Absolutely. Really looking forward to see him fit. It would be nice if we can see him fit in this tournament. Good opportunity in this surface. I know, bit of a spice for him in this surface. He can use that. Top edge. Fine leg was up in the ring. Ahmad Butt will challenge Haris, but Haris is very, very quick. At the halfway stage, Allied Bank Stallions 94 for 2, and it's time for drinks at the Pindi Stadium. Allied Bank Stallions looking in good shape here. Skipper Haris batting on 46 of 24. Decent enough start with contributions from Yasir and Maz. They both were dismissed after getting good starts. Now Hussain Talat, the form man, and skipper Hussain with Muhammad Haris, who's been in belligerent form. 46 of 24 from ball one. His intent was clear and he was prepared to chance his arm. Got away with it, and he's been ultra aggressive throughout this knock. Plenty of bowling options utilized, but just the 2 wickets for Lake City Panthers. Still yet to see Shadab at the bowling crease. Yeah, I did ask him the same question at the toss. If he's bowling fit, he wasn't quite sure that he wants to bowl. He's mainly playing in this game as a batter. As we see, a team who has picked up the momentum, Nurpur Lions. They're a team to watch out for in this tournament from now on. They're getting it right at the right time. It's a big clash this afternoon. Nurpur Lions are in the attendance already. UMT markhors, formidable side under Misbah Haq, Saeed Ajmal and Iftikhar Ahmed.
Catch. This has gone big. This is out of the park. Hussain Talat sends it soaring into the stands. He's the man in form, Hussain Talat. And that one was surely in his zone. Knee down, ball up into the stands. Beautiful shot, great pickup. Great force also behind it. Never intended to keep it down and got the desired result. Went miles away into the stands. That was a big, big hit. Count the steps, Ali. How many rows back? 20. I don't think you were good at math in your school days, Ali. 100 has been brought up with this gigantic strike from Hussain Talat. Right in the arc with the tide. Smashed mammoth hit from Hussain Talat. Taimu, even Shoaib Malik, their intent is quite positive all the time. All the time looking for boundaries, and they're in form too. So they're a very good batting side, allied Bank Stallions. Well, if you look up for standout batters, Lake City Panthers, they've got Haider Ali, who's in sublime form, and Harris, who's been a different player. This is in the air, not a clean strike, but he may just get away with it. Yes, he does. Danish Aziz was really struggling to get underneath that ball, but that slice on the ball always kept the ball away from Danish Aziz. 11 gone, 104 for 2. Perfect Sunday. Sunday outing. Nothing gets better than this. Quality cricket, great weather, and a holiday. Sunday, the fun day, and it is a super Sunday here in Barrier Town Champions Cup T20. Humdinger of a clash coming your way in the afternoon. On the up are Nurpur Lions and formidable UMT Markhors. Oh, this is wrong line and been punished, but not the way Harris would have wanted. Just the single takes him closer to that landmark once again. He's on 48. Would be his second 50 of the tournament if he gets there. Yeah, Shadab trying different things, bringing back the off spinner Mubassir Khan. Gave away 11 runs in his first over, got a wicket though in the very first delivery. They like bowling to Hussain Talat, the left-hander, but the trouble is on the other end, where Harris is looking some fantastic touch. He's just hitting them so beautifully, clean hitting, proper cricketing shots. It's about to reach a milestone, 48 at the moment. Looking at that onside boundary, this is where he's gone. But Ahmad Butt will do the tidying up. This is good from Mubassir, not allowing Harris to get underneath it. Just 62 more required of 51 deliveries. That's the equation. And looking at the batting lineup of Stallions, shouldn't be a problem. How quickly they do it, that's the question. They need to break this partnership, not just one, maybe the next one too. A couple of quick wickets can definitely bring them back. Nicely cut away. Work to do for Ahmad Butt again, but won't be able to stop the second run on that occasion. Maybe
an overthrow, but Hussain Talat overran that. Yeah, looking at the batting lineup, Mohammad Mohsin is also in form. How brilliantly he batted in the previous game. Definitely would be looking to see how he goes again. And then Shoaib Malik. And then Taimur. So they got plenty of resources in the tank. Once again running hard. 2 is the call. It's into the pocket. Brilliantly placed by Hussain Talat. And superb running. This is very good cricket. Yeah, that's where Hussain Talat is so good. Picking up the gaps. Soft hands. Knew that there was 2 available. Great combination. Where Hussain Talat can go big on his will and then can tap it in the gap and get couple. And again. Straight bat for 1. Good batting. Very good batting. 112 for 2 in 12. ये बैरियर डाउन प्रॉपर्टीज इनकी अगली पेशकश है। अब अपने आलमी मंसूबों को शुरू करना दुबई का रुख किया है बैरियर डाउन ने। वहाँ पर आलमी सतह की जो सहूलियात हैं वो पाएंगे। वसीम जूनियर आए हैं वापस। बड़ी अच्छी पोजीशन, उम्दा पार्टनरशिप 48 रन की, जिसके सबब अब यहाँ से जो बॉलर्स हैं इनको पापड़ बेलना है। सिर्फ 7 की औसत दरकार है, 8 विकेटें बाकी हैं। हमने देखा है टीमों ने यहाँ से भी कम बैक किया है। शादाब खान को अंदाजा होगा। मरीना इकबाल। बिल्कुल, और पहली इनिंग्स में भी हमने देखा कि जैसे 10वां ओवर मोहम्मद अली ने 2 विकेटें वहाँ से पिक की थी तो मोमेंटम वापस आ गया था। तो एक ओवर जिसमें अगर 1 या 2 हासिल कर सकते हैं विकेटें तो कामयाब होंगे, लेकिन अभी हुसैन तलत और हारिस का इरादा यही है कि जिस तरह का मोमेंटम हासिल किया हुआ इसको मजीद एक्सेलरेट करें। बहुत ही ख़राब गेंद था वसीम जूनियर की जानिब से। जहाँ अच्छा इस्तेमाल किया यहाँ पर अपनी क्रीज का से पुल कर दिया। 50 रन की पार्टनरशिप हुई महज 33 गेंदों में। हुसैन तलत अच्छे बैटिंग के दौर से गुजर रहे हैं इन दिनों। यहाँ शॉट को दोहराने चले गए थे, ये गेंद ज्यादा तेज नहीं निकली पड़ने के बाद। हारिस ने जवाब दिया है हैदर की उस इनिंग्स का जो काबिल तारीफ थी। शायद इनका जो बल्ला है उसकी हालत बिगड़ गई थी, और वैसे भी जो इनके बैटिंग करने का अंदाज है, इनको तो 1 से ज़्यादा बल्लों की ज़रूरत होती होगी एक टूर्नामेंट में। बिल्कुल, ज़्यादातर बैटर्स जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 बैट्स रखते ज़रूर है, जिसमें से 1 या 2 आपके मखसूस मैच बैट होते हैं। और जब तक बैटर अपने बैट से कंफर्टेबल नहीं है तब तक एक इशू ज़रूर रहता है। हारिस अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। 50 रन यहाँ हारिस के मुकम्मल हुए। उम्दा बैटिंग का मुजाहरा उनकी जानिब से। ये टूर्नामेंट इनके और टीम के लिए बड़ा कारगर रहा है। अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया। सिर्फ 28 गेंदों में इनने ये रन्स बनाए। हालांकि कोई छक्का नहीं, लेकिन स्ट्राइक रेट 178 का शानदार। आज थोड़ा ज़्यादा जारहाना अंदाज में नज़र आए पहली ही गेंद से। ओवरऑल इस टूर्नामेंट में देखें तो थोड़ा सा अपने रोल को समझा भी है और अपना तरीका भी थोड़ा सा चेंज किया है।
लेकिन आज ज़्यादा अटैकिंग मोड में नज़र आ रहे हैं. अच्छा तेज बाउंसर वसीम जूनियर का, अंपायर ने वाइड का इशारा किया. ज़ाहिर है ये ओवर का एक बाउंसर भी शुमार होगा. T20 में आप एक ही बाउंसर कर सकते हैं. वनडे क्रिकेट में बॉलर को 2 बार बम्पर की इजाज़त होती है. ये बल्लेबाज को ये खौफजदा कर देने वाला बाउंसर था. इस वक्त जो है वो स्क्वायर फील्ड खड़ी कर दी गई है हुसैन तलत के खिलाफ. सामने साइड स्क्रीन के पीछे मूवमेंट है. दरअसल शायद वो जो गुजरगाह है जहाँ से तमाशाई जा रहे हैं नशिस्तों की तलाश में. आज के दिन आपको बॉलर्स में से किसने मुतासिर किया है? मरीना, ज़ाहिर है हैदर और हारिस की बैटिंग की तो बात होती रहेगी. इनिशियली आज हेल्प ज़रूर मिली है फास्ट बॉलर्स को, हमने पहली इनिंग्स में भी देखा, लेकिन लेक सिटी पैंथर्स ने मेरे ख्याल है उन कंडीशंस का ज़्यादा फ़ायदा उठाया नहीं नए गेंद से. और जैसे आमिर ने अच्छी बॉलिंग की, उन्होंने पेस का अच्छा इस्तेमाल किया, नई गेंद पे वो अच्छे नज़र आए. और मोहम्मद अली स्टैंड आउट रहे हैं, जिस तरह की डेथ बॉलिंग उन्होंने आज की. बेहतरीन फुटवर्क, लाजवाब क्रिकेट शॉट था ये. कतई स्लॉग करने की कोशिश नहीं की और क्रीज से बाहर निकलकर भी टाइम करने में कामयाब हुए. चौके के साथ ये ओवर 12 पर खत्म हुआ. 124 पर 2. उसामा अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है ये खासा यकतरफा रहा है. और 50 रन बनाए हारिस ने. दूसरी बार उनने ये कारनामा किया इस टूर्नामेंट में. ये वो खूबसूरत चौका था, बाहर निकलकर जैसे बल्ला मिलाया गेंद तक. अच्छी टेक्निक और एक अच्छा माइंडसेट देखने में नज़र आया है आरिस की जानिब से. सिर्फ ऐसा नहीं कि ऑल आउट अटैकिंग शॉट्स खेली हैं, इनिंग्स बिल्ड करते हुए नज़र आए. इनिशियली जिम्मेदारी भी खुद पे ली और एक और 50 रन अपने नाम किए. ये अच्छा चेंज मोहम्मद हारिस की अप्रोच में हमें देखने को मिला और वो काम भी कर रहा है, एग्जीक्यूशन भी उसी मुताबिक करते आ रहे हैं. हारिस पाकिस्तान शाहीन्स के कप्तान थे हालिया इमर्जिंग एशिया कप में. उससे पहले ये पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप खेले हैं, लेकिन जाहिर है अब ये पाकिस्तान टीम से दूर हैं इन दिनों. हसीबुल्ला जो हैं टेस्ट टीम में चले गए, इनके पीछे आकर, और इनकी वनडे स्क्वाड में भी जगह नहीं बनी. जो वनडे की टीमें गई थी अभी हाल ही में अफ्रीका के दौरे पर, जिम्बाब्वे और जनूबी अफ्रीका में. जाहिर है उसका भी एहसास हुआ होगा. वो भी जो आपने बात की कि हारिस ने बहुत अच्छी सुलझी बैटिंग की, और यहाँ ये ज़्यादा अच्छा शॉट नहीं था और कैच ले लिया आकर अरफात मिनहाज ने. रिवर्स का पुण्य बनाया, खासा हाई बॉल था लेकिन उम्दा कैच
और इस तरह विकेट मिल गई जिसके मुतलाशी थे उसामा। अच्छी पार्टनरशिप जा रही थी दोनों के दरमियान और ब्रेक थ्रू हासिल करने में कामयाब हुए उसामा। हुसैन तलत ख्याल है मिड विकेट खेलना चाह रहे थे, लेकिन उसामा की गेंद की लेंथ को पिक नहीं कर पाए। थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी था जिसकी वजह से जो मिड विकेट बाउंड्री की ऑप्शन थी वो उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए और सीधा गेंद खड़ा कर दिया। और अच्छा जज किया हुआ कैच अरफात की जानिब से, थोड़ा सा आगे निकले थे लेकिन एडजस्ट किया और एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है लेक सिटी पैंथर्स को। हुसैन तलत 32 बना के वापस 128 पे 3। मोहम्मद मोहसिन आए हैं, नए खिलाड़ी। उनकी एक इनिंग्स सेंचुरी है जो अभी इन्होंने पिछले मैच में बनाई थी। कदर ताखीर से मौका मिला है उन्हें इस सतह पर, लेकिन सलाहियतों की कोई कमी नहीं। खासे मंजे हुए बैट्समैन लगते हैं। बहुत अच्छी पार्टनरशिप इन्होंने हुसैन तलत के साथ बनाई थी पिछले मैच में, प्लेयर ऑफ द मैच भी हुए थे और अभी भी वैसे ही मौका है, ज़्यादा रन रेट रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा स्वीप शॉट खेला यहाँ पर, तीसरे रन के लिए भी क्या आएंगे। मोहसिन ने बुलाया जरूर था हारिस को, लेकिन उन्होंने खतरा मोल नहीं लिया। उमर थे फील्डर और 14 ओवर्स के बाद 130 पर 3। मिस्टर शिराज सलीम बैरियर टाउन के हेड ऑफ मार्केटिंग हैं, अंदर आएगा बटा दे, अंदर आएगा घूमेगा। टाइटल स्पॉन्सर्स हैं इस बैरियर टाउन पाकिस्तान T20 चैंपियंस कप के 2024 के। बैरियर टाउन जो है अब इनके आलमी मंसूबा जात जो है शुरू हुआ चाहते हैं दुबई से, इसका आगाज हो रहा है। यहाँ पे थोड़े डबल माइंड में लगे मोहसिन और हारिस। 2 रन अवेलेबल थे लेकिन एक पे इत्तेफाक किया। छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं, Required छोड़ेगा run rate जो नहीं। है वो 6.5 का और करंटली ये 9 पे चल रहे हैं। यहीं पे है तो थमा आराम से। लवली यहाँ पे थमा। बस लेक सिटी पैंथर्स की गोल कोशिश आबाद, होनी चाहिए कि वेरी अगर गुड एक गोल और आबाद। विकेट हासिल कर पाते हैं तो फिर शायद मुकाबला जो है वो एक करीबी मामला बन सकता है। वो शॉर्ट गेंद थी और इसे कट किया, बहुत जोरों पर नजर आए हारिस। गेंद बेहद तेजी के साथ गई चौके के लिए। अब वो जल्दी इस मुकाबले को खत्म करना चाहते हैं। देखिए जो ही थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर जगह नजर आई, ये बहुत काफी थी इनके लिए। पीछे था गेंद। अरफात मिन्हास को ये जरूरी है समझना कि हारिस की क्या स्ट्रेंथ्स हैं। ओह शानदार विकेट कीपिंग और उतनी आला बॉलिंग भी अरफात मिन्हास की जानिब से। हारिस उनके दाम में आ गए। बिल आखिर ये मुकाबला रास नहीं आया। कप्तान हारिस को अच्छी स्टंपिंग विकेटों के पीछे उमर सिद्दीक की। अच्छा कमबैक था अरफात की जानिब से। पिछला गेंद खिंचा हुआ था, आउटसाइड ऑफ स्टंप था जिसको कट किया था 4 रन के लिए। इस बार थोड़ा सा फ्लैटर ट्रैजेक्टरी थी अरफात की जानिब से और बहुत ही जल्दी क्रीज से बाहर आ गए थे हारिस।
देखें इनटू द सरफेस कराई थी जिसकी वजह से बीट हुए और बाकी काम उमर सिद्दीक ने किया। एक बड़ा ब्रेक थ्रू और ये अलाइड बैंक स्टैलियंस के लिए एक बड़ा झटका भी, क्योंकि कप्तान की वापसी हुई भी 61 बना के वापस डगआउट में अलाइड बैंक स्टैलियंस 136 for 4। ऑल एक्सपीरियंस शुएब मलिक बहुत बार ऐसी सिचुएशंस में आके बैटिंग कर चुके हैं और मैच भी जितवा चुके हैं। 33 रन सिर्फ दरकार हैं अलाइड बैंक स्टैलियंस को यहाँ से मैच जीतने के लिए। जितना इनका एक्सपीरियंस है कोई ख़ास मुश्किल नहीं होगी। ये नंबर्स बताते हैं कि कितने शानदार बैटर रह चुके हैं। ये एक अच्छा स्ट्राइक रेट है, हाईएस्ट 95, बहुत तजर्बा है इनके पास हर तरह की सरफेस, हर तरह के बॉलर्स को फेस करने। तेज गेंद करने की कोशिश की थी अरफात मिनहाज से। मलिक ने अपना पहला रन हासिल किया, इसे ऑफसाइड में धकेलकर। अच्छा ओवर मिनहाज की तरफ से 137, 4 विकेट। ये पहले 2 ओवर्स के बाद से आप देख सकते हैं कि अलाइड बैंक स्टैलियंस की जो लकीर है कितनी ज़्यादा ऊपर रही है। सिर्फ जो विकेटें हैं वही इनको बराबर में नीचे ला सकते हैं नीली लकीर की। और रावलपिंडी में आज एक मैच और खेला जाना है, तो इतवार के एतबार से बिल्कुल सीन सेट है। इसके बाद यहाँ पर नूरपुर लायंस की टीम खेलेगी जिसने पिछले दोनों मैचेस जीते हैं। इमामुल हक कप्तान है। यूएमटी मार्खोर्स की टीम पहले राउंड में उन्होंने 3 फुतवाहत हासिल की थी, उनको मैदान में उतरना है। स्पिन हुआ है झाड़ी। दानिश अजीज क्या ये अपनी लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग का जादू जगा सकते हैं? ऑलराउंडर के तौर पर खेलते हैं ज़्यादातर। आज अच्छी बैटिंग का इन्होंने मुजाहरा किया था। आज थोड़ी सी अगर कप्तानी की बात करें, शायद आप बहुत जल्दी डिफेंसिव हो गए थे। दानिश अजीज के नंबर्स हैं, अक्सर इन्हें ब्रेक थ्रूज के लिए भी इस्तेमाल किया गया। स्टार्टिंग में नए बॉल में भी हमने देखा है कि स्लिप का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। इजी रन्स, स्पेशली सिंगल्स जो हैं वो पहले ओवर से ही दस्तयाब थे। जब आप इस तरह का टोटल डिफेंड कर रहे हो तो कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। नए बॉल से हालांकि यूज़ किया जाता तो विकेट्स लेने जाते तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती थी अलाइड बैंक स्टैलियंस को, लेकिन आज थोड़ी डिफेंसिव कप्तानी देखने को नजर आई। उसामा शुएब मलिक के लिए मिड ऑफ पर आए हैं, वाइड मिड ऑफ पर, लॉन्ग ऑफ पर हैदर अली के पीछे हैं। एक ही गेंद को स्पिनर की 2 तरह से खेल सकते हैं, उन्होंने कर दिखाया। ये लेंथ थोड़ी पीछे कर गए थे। आइडिया सही है क्योंकि शुएब मलिक इस वक्त शायद बड़ी हिट के लिए ना जाए, उनके लिए आसान है सिंगल्स रोटेट करना। उन सिंगल्स को ही कट डाउन करना चाह रहे थे, लेकिन दानिश ने लेंथ थोड़ी पीछे कर दी, इसलिए टाइम मिल गया उन्हें ऑन साइड पे खेलने का।
इस बार दूसरे रन के लिए आना चाहेंगे क्योंकि आहिस्ता से खेला था और एक ही आखिर में बन सका। अच्छा ओवर दानिश अजीज का रहा 143 पर 4। थोड़ा सा हो सकता है। It's a murky afternoon here in Rawalpindi. The run chase has been pretty good from Allied Bank Stallions. Getting into the last 4 overs, just needing a little over a run a ball with Mohsin in the middle, and the past master of run chase is Shoaib Malik. You would think it should be walk in the park, but we know cricket is a funny game. हम दोनों ही सेम जगह पे हैं। मेरा हैमिंग है ना। Beautiful shots of Rawalpindi Cricket Stadium. lovely है। This is where Shoaib Malik is at ease. Can ease into the innings. बॉलिंग अरफात। And easing into his chair alongside me is former Pakistan skipper Salman Butt. Thank you, Shaji. Yes, Stallions have put up a very decent batting show, and as a result, they have got this match to nearly run a ball, and that is the ideal position to be. Courtesy Haris playing well, Hussain Talat coming in once again, scoring runs, and now the experienced mentor Shoaib Malik is there to see his side home, and along with him is Mohsin, who looked excellent in the last game, and even he's come out today. You can see the confidence in his body language. And Lake City Panthers would feel they had a chance to score big runs, but losing wickets in clusters did not enable them to do so. At 2 occasions in their innings, they lost wickets. One was when they were 73 for 1, they lost 2 together, and then after getting to 136 with 2 set batters, they lost a wicket at 136 and 143, and then it just started to happen very frequently. Some turn there for Arafat Minhas. Beautifully flighted delivery, turn and grip. Sign of things to come in the afternoon. Remember, we got another game coming up. lovely shot। Malik watches it very closely onto his bat. Good over from young Arafat Minhas, 17 gone. Allied Bank Stallions, 146 for 4. Bowling change right arm. Lake City Panthers 168 for 7, plays 146 so far for 4, in control, 23 needed of 18 balls. That's the equation. It's important that the batters now look to play straight. Why I say that is because this bowler Wasim Jr. has a tendency to bring the ball back in off the surface of the pitch, and his ball tails in and skids off the surface. We have seen him get wickets, people looking to dab him down to third, so it's important that they play in front. And this one was there, a touch close to cut, but the shot was on. Mohsin missing it. The very smart Mr. Shiraz Salim, head of maintenance,
and services. Barrier Town is there to witness the game as Barrier Town sponsors this T20 Cup. They also go global, meanwhile, bringing a gated community in the Dubai South. Well, dots are building in the meantime. They required 26 of 24, and now they require 23 of 15. Well, yes, Lake City Panthers would need a lot of dot balls and nearly everything in the right areas. So Stallions need not to panic and take a calculated risk if they have to. There's loads of gaps, people on the boundary, 2 runs are always there. This is something which isn't required. Very well ball, Wasim. 6 dots, Salman. And the way the table is, it's pretty close. And remember, one team will qualify directly for the final. Net run rates can come into it as well. Bit sloppy, Allied Bank Stallions in the last 6 deliveries. They're creating interest in the game out of nowhere. Just need to play normal cricket. And this should be over as this one hits the helmet and goes down the third man for the one which is given as a leg bye. The umpire will test him for concussion. Will be hold up now. But this is dragging on for the last 5-7 minutes for Allied Bank Stallions. Wasim is kiddie, we all know that. And hit him flush on the side of the helmet. Good job, he's got the visor and the protection. Could have been very nasty. Mohsin coming off the back of a very good half century in the previous game. Player of the match performance from him. Stallions would remember that they lost a game from this position when they required 38 of 30 odd deliveries. 35 or 25, but it was 38 of 30 deliveries before that, and they started to lose wickets. And then the panic set in. So they need not to panic. Just keep rotating the strike, because one boundary will bring it closer to run a ball, and then a couple of will finish it off. But there shouldn't be the loss of wickets and the panic. Haris looks on with great interest. Definitely Stallions want to win it and secure their top spot. Was that a worried look, Salman? A concerned, I would say. He's definitely been through these circumstances in a game so many times. These situations arise, and that is where Shoaib Malik should lead from the front. A man having played 500 plus T20 should know all the paths of getting through. There is no Wasim Bhai and Waqar Bhai to bowl the last 2 overs. That was the duo who could do the unbelievable, and they did it so frequently. Yeah, definitely they would have been a sure bet to win if that equation was there when they were around. Good crowd, the best crowd of the tournament so far. They're really excited. They've all gathered where UMT markhors are training, having a closer look at the stars. Someone like Fakhr Zaman and Iftikhar. Important delivery this. Last ball of Wasim Jr.'s over, and his spell. Big shout, big shout. Umar Siddiq was celebrating. Nothing says umpire Sajid Afridi. Another dot ball. Wow. This is getting a bit tense here. 18 gone. 148 for 4.
Saeed Ajmal, the magician, was greeted by the crowd. Misbah Haq is also there. Well, Allied Bank Stallions need a boundary or two in this over. Arafat Minhas has been able to turn the ball. Excitement building. Goes down the wicket. Nice adjustment of length there from Arafat. Well, things get tighter as Stallions would be remembering the previous game, the Demons from that game when they required 37 of 25 with 8 wickets in hand. And in the end, they lost the game. And once again, Shoaib Malik right at the center of such a situation. As this one has been clobbered straight over the head of the fielder, not very well connected, and misfield enables an easy couple. So there is desperation on both sides, and the team that holds the nerve should win it from here. That's the appeal. Last ball, last over. Sliding in. Probably impact was just outside the off stump. Good call, Sajid Afridi. But it's all about now. As smashing blow. An absolutely terrific strike down the ground. Even Wasim was quite quick. Couldn't get around. A timely boundary. Yes, he is still very quick on his feet. Great use of them. And he clobbers one down the ground for a boundary. The fielder Wasim Jr., he's quick, but he wasn't quick enough for this stroke as Shoaib Malik hits it hard to get this vital boundary and ease off some pressure. But they will need a couple of more boundaries somewhere around the corner in the remaining 9 balls. As this one is placed over cover, but the fielder, well, Shoaib Malik is running, and we all know he's quick, but we'll see whether he's quick enough. He seems to have pulled up a muscle and he's just limping, but the reaction of the fielding side tells you that he was quick enough. Yeah, Mahd Butt is a very good outfielder. He tested Shoaib Malik all the way. The throw was wider, allowing Shoaib Malik to get in, probably not by much. Umpire is hiding the view of the stumps. This will probably be the best picture, and Malik is home. Excellent running in the end. Probably a calf or a hamstring at the moment has been and here is the official decision, not out, so no worries there, but the only worry is the pulled muscle. Shoaib Malik 14 of 13, just getting in the rhythm, has 13 more required of the last 8 deliveries, and he would love another boundary in these 2 deliveries. Wouldn't want much pressure in the last over. So very crucial 2 balls remain in this over. Arafat, the youngster, bowling well. 156 for 4 is Allied Bank Stallions, as a number of people watch this with great interest, and Haris, his concern will remain till they get over the line. Sure, and look at the Sunday crowd building up, but also think about the last over. If Arafat Minhas, when Shoaib Malik gets ready, gets away with this over, how many would he leave for the last over? And a decision for skipper as well, Shadab Khan. Look at this running, Shoaib Malik running in straight line, a blind turn which is not recommended, and a slightly longer route on the way back. Yes, his speed allows him to do that. He's ultra quick, and this is the guy, the oldest guy playing in this tournament, and perhaps is the quickest guy. So that myth of age being something that stops you, if you train well enough, if you eat well enough, if you know your body, then you can definitely do things which others only wonder. Again, I'll bring you to the question, who would you fancy for the last over if it goes that far? Wasim Jr. has bowled out, who would normally bowl the last over. This is being thumped by Malik. Good hand from Osama. May just concede a run because it was going straight to the sweeper. It's a very crucial position, this, and
they have two fielders who are probably not the fastest, Shirjeel and Usama, third and point, especially when the bowler plans to bowl a bit short with two fielders in the ring on the covers. You can't expect the bowler to bowl full. So this makes these two fielding positions very vital, and an extra run which has taken the required runs to 11 of 7 deliveries. A very important ball this. And the edge goes through the same set of fielders, and that's a boundary. Perhaps luck on side of the Stallions. Fortune favors the brave. Shoaib Malik stepping down, going over cover. The idea was right. The result is ideal, but not the direction. It's 162 for 4. Ever reliable Ahmad Butt has been given the responsibility to protect 7 runs. Shaji, it's a challenge in this weather to stay warmed up, especially for fast bowlers to come in after a layoff and deliver this final over with such command of accuracy which will be required. See, 7 of 6 required, and he's been fielding in the outfield. So all the players playing this tournament in this weather, they just need to keep moving and stretching because they can be called anytime in this format. And it's Mohsin, 6 of 7 required. And Ahmad Butt to deliver this final over. Third man, final leg, both up in the ring. Mohsin calmly does the job. He gives it to Shoaib Malik. You've done it for decades, sir. Go on and finish this one as well. Yes, that makes sense. And had it been any better on strike, you shouldn't miss the run of any delivery from here onwards, because that brings more pressure on the fielding side as well. And it's been twice now that the Allied Bank Stallions have been in commanding positions, and then there's a slowdown in between, which makes their last couple of overs very difficult. And I think they definitely would sit down and review this situation, which has happened twice now, and they would want to avoid such situations come the bigger games. Yeah, definitely. They need to address that issue. They bossed the run chase until the last 2 overs on the previous occasion as well. Needed 23 of 2, couldn't get over the line. This one, they look more in control. They needed 21 in the last 2, and now they need 6 of 5. Crashed away straight to the sweeper. Pressure building the longer it goes into the over. Has come down to 1 stroke certainly. 5 runs required of 4 deliveries. A 4 will equal it, and a 6 will win it. But it has to be done before any result comes out. Mohsin 9 of 13. He's watching the ball well. He's in form. This is Yasir, who's been playing little cameos, hasn't carried on in this tournament. As Ahmad Butt prepares, and the whole Lake City Panthers wishes him luck to be as accurate as possible. Once again, cut hard, and this time he's looking for the second run, and he will make it easy. And I don't know why the keeper didn't make a throw. It's about getting wickets, not saving the extra run at the moment, because Haider Ali was running for the backup. Shadab is furious, isn't happy. That was Danish Aziz in the deep. He's not one of the very quick movers. But you make a point. Haider Ali was backing up. He was alert. The wicketkeeper just held the throw back. Third up in the ring. So is backward point. And the fielder at point is deep on the boundary. Very little protection in front of square on the offside. If Mohsin is able to get it through.
Good Yorker, Ahmad, but it's in the gap though. Nicely struck, and that is the winning moment. And look at the passionate celebration from Mohsin, who delivered the killer blow in the end. Allied Bank Stallions getting over the line in a nervy finish. A solid shot that to finish the game. A full toss placed between the two fielders perfectly on the onside, between mid-wicket and long on. And Shoaib Malik and Mohsin finish it, and they take Allied Bank Stallions over the line to register this important victory. They get to 170 for 4 of 19.4 overs. They win with 2 balls to spare, and they would definitely go back to the drawing board and discuss how to avoid these tight situations when they have been at such ease in the run chase. But for now, they can enjoy their victory. It was a great shot to finish the game, and Mohsin showing loads of passion in these pictures, and he knows that he should have and could have done better. And the pressure is off now, but definitely the discussion is, why did we get so far with this? A great game of cricket in front of a very good crowd, the Sunday crowd at Rawalpindi Stadium. It got a bit too tight for Harris's liking. Probably they'll sit down and talk about it, but a good fight in the end from Lake City Panthers. And at the halfway stage, Salman, the way you said, they probably fell 15 to 20 short of what they were looking to achieve, and that is what Lake City Panthers will reflect on, but points to Allied Bank Stallions. Shaji, there is no formula in sport that only ends up on the winning side. You can falter with anything, but consistency comes with the tried and trusted methods. What's difference between the two sides is wickets falling in clusters for Lake City Panthers, and for Allied Bank Stallions, they have continued to maintain partnerships, and that is where the two teams have differed, and that is why the result has gone in the favor of the Allied Bank Stallions. They were in a position, the Lake City Panthers, to score big, but in the end, their wickets falling didn't allow them to do so. Here you can see partnerships from ball 1 till the end. 20 to Yasir, Maaz 18, 61, very crucial, of 35 deliveries for Haris. Hussain Talat, once again important, 32 runs in the middle. Mohsin and Shoaib Malik taking the team over the line with 15 and 21 each, and in the end, they managed to chase it down. Just the 4 wickets for Lake City Panthers. They used 7 bowlers. Shadab tried plenty of things. Osama was probably the pick, 2 for 30. Still no effort from Shadab on the bowling crease. He just purely played as a batter in this game, recovering from back injury. 1 wicket from Arafat Minhas, who looked good in patches. In pursuit of 169, Allied Bank Stallions, they got off to a decent start. Yasir and Maaz Sadakat